Friends, good morning. In our last class, we had studied about the periodization, and I taught you that James Mill he divided the Indian history into three categories, that was Hindus, Muslims and British. तो उसने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? हिंदूज, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. बट दिस डिवाइडेशन वॉज नॉट करेक्ट. लेकिन ये जो डिवाइडेशन था वो करेक्ट नहीं था. देयर वेर प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद दिस पीरियडाइजेशन. जो जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन किया उसमें प्रॉब्लम थी. प्रॉब्लम क्या थी? यदि एक जगह हिंदू राजा का नेतृत्व है, इफ देयर इज लीडरशिप ऑफ हिंदू, तो ये जरूरी नहीं है कि जो जनता है वो भी हिंदू हो. यदि मुस्लिम किंग है तो बाकी की जो जनता है वो मुस्लिम हो. ये पॉसिबल नहीं था. ऐसा भी था कि नॉर्थ में इफ देयर इज रूल ऑफ हिंदू, इन साउथ देयर वेर रूल ऑफ मुस्लिम्स, एंड इन अदर प्लेस इफ देयर वाज रूल ऑफ मुस्लिम, in the next place there was rule of Hindu. So he divided the history only on the basis of the religion. He did not included other matters in the periodization. So this was the problem of the periodization of the James Mill. इसलिए ये जो प्रॉब्लम थी किसके कारण? जो पीरियडाइजेशन थी जेम्स मिल्स के कारण. तो इसके बाद में जो इंडियन स्कॉलर्स आए उन्होंने इसको फिर से पीरियडाइजेशन किया. किसको? इंडियन हिस्ट्री. एंड दिस टाइम इंडियन हिस्ट्री वाज क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स. अगेन इट वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, एंड दिस टाइम इट वाज डिवाइडेड बाय इंडियन स्कॉलर्स. इस बार ये किसके द्वारा डिवाइड की गई? इंडियन स्कॉलर्स. और इंडियन स्कॉलर्स ने इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया. वो थ्री पार्ट्स कौन से थे? एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. So Indian scholar they divided the history into three parts, and that three parts were ancient history, medieval history and modern history. Ancient history means प्राचीन कालीन history that was related with the rule of King Buddha, rule of King Ashoka. And modern history means it was based on the Western. So it was related with the development of science, freedom, equality. So ancient हिस्ट्री क्या थी? जो हिस्ट्री वो प्राचीन काल से रिलेटेड थी. किससे? राजा बुद्ध, अशोका, उनसे. एंड जो मॉडर्न हिस्ट्री that was related with the development of science, and it was based on the freedom and equality of the society. And medieval history that was also known as the transaction period. क्योंकि ये जो एशियन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री है उसके जो बीच का पीरियड था उसको क्या कहा गया? मेडिवल हिस्ट्री. लेकिन ये जो डिवाइडेशन था मॉडर्न हिस्ट्री, it was also based on the Western culture. It was also, so there were also some problems which were related with it. तो प्रॉब्लम्स क्या थी? अब उन्होंने तो जो वेस्टर्न बेस था उसके ऊपर इनको डिवाइड कर दिया, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. लेकिन उन्होंने मॉडर्न में क्या इंक्लूड किया? डेवलपमेंट ऑफ साइंस, फ्रीडम एंड इक्वलिटी. और ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ये जो जेम्स मिल है उसकी कौन सी है? ब्रिटिश. मीन्स एट दैट टाइम देयर वाज रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. देयर वाज रूल ऑफ British government. The India was under the control of the British. So there was no equality or there freedom was not there. So it was not suitable for the Indian history. It was only suitable for the Western history, because all these things were not present in the Indian modern history, because there was no development. There was no freedom, there was no equality, and there was no democracy. So it was not suitable for the Indians.
that was the problem of the dividation or periodization of the history which were done by the Indian scholar. So now you have to write and learn the answer of the question. So what is the first question? Write down. Everyone note down the first question. What were the problems of periodization? What were the problems of the periodization which were related with the James Mill? So what were the problems which were related with the periodization of the James Mill? And what is next question? Now you have to return first question. Now you have to write down the second question. How have historian divided Indian history? What is next question? How have historian divided Indian history?